Machephy Eduworld. So in the previous class, we were solving the problems based on Newton's second law, that is, net force is equal to mass into acceleration. And that we did by drawing the free body diagram and then solving the equations. So in this class, we're going to continue the same thing, but we are going to increase the difficulty and bring in some more concepts. Goes over the first pulley and then the second pulley. Curves around the pulley, and then it is attached to a mass of 1 kg. You have to calculate the acceleration of each block. Let's call this as A1, this as A2, and then the tension in the loop. Find A1, A2, and tension. So we'll start off by drawing the free body diagram. अभी जब तक given नहीं है, you don't have to take friction anywhere. कहीं पे भी friction नहीं है, and pulleys are massless. So pulley का acceleration you don't have to consider. Pulleys are massless, and rope and surfaces are frictionless. See M1, which is greater, that is not known, and that won't affect the answer. You can take the acceleration in any direction. है ना, यहाँ पे suppose ऐसा ले लिया कि इस direction में motion हो रहा है, and जब values अगर इधर acceleration है, so for this acceleration will be in the upward direction. तो जो आंसर निकालेंगे उसका डायरेक्शन तब पता चलेगा जब वैल्यूज गिवन होगा m1 m2 एंड θ1 θ2. ऐसे पता नहीं कर सकते. अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया आंसर से तो हमारा डायरेक्शन सही था. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो हमारा डायरेक्शन रॉन्ग था, बस ऑपोजिट आएगा उससे. नमन, इस केस में एक्सेलरेशन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में. हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आ गया. कितना आ रहा है सर? 10 आ रहा है, और सर दोनों के लिए सेम ही रहेगा. 10 आ रहा है एक्सेलरेशन. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया? हाँ सर, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया था सर. ठीक है, साथ में बनाते हैं 1 kg ब्लॉक का. सो क्या क्या फोर्सेस हैं इस पे? सर mg कितना है? सर mg 1 × 10. और सर टेंशन लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में. ठीक है, और एक्सेलरेशन भी है इसका? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है. डाउनवर्ड. क्या इक्वेशन लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे सर जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं. तो पहले 10 - t. यस सर. सर 10 - t = a. या m1 है तो a1. हाँ, ठीक है. फिर 1 kg ब्लॉक का टेंशन सेम होगा या कुछ और होगा? सर टेंशन तो सेम रहेगा. सेम रहेगा. राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में. लेफ्ट. तो ये हो गया टेंशन t, और एक्सेलरेशन किधर होगा? राइट डायरेक्शन में. नहीं, एक्सेलरेशन राइट में कैसे हो जाएगा? नहीं, सॉरी सर, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में ही रहेगा. हाँ, लेफ्ट में ही रहेगा. सो टेंशन की वजह से एक्सेलरेशन आता है. और कोई फोर्स होगा इस पे? हाँ. कौन कौन सा? और सर mg लगेगा. mg लगेगा नीचे. और कोई फोर्स? और सर नहीं सर, और कोई नहीं लगेगा. और कहीं पे कांटेक्ट है? सर नीचे सरफेस पे कांटेक्ट है. हाँ, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना एक और. न्यूटन नॉर्मल फोर्स n. हाँ. सो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा तो n = 10, ये बैलेंस आउट हो जाएगा. हाँ. हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि सेम रोप है. T = a. हाँ, T = a. तो उसको सॉल्व कैसे किया? दोनों को ऐड कर देते हैं.
हाँ सर, सॉरी सर 5 आएगा मेरा, मैंने 20 ले लिया था अच्छा, इसीलिए so 10 A1 आया। ठीक 5। है, A1 5 करेक्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड हाँ स्क्वायर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। फिर टेंशन सेम कितना आएगा? रहेगा सर, एक ही वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन वो आ जाएगा, टेंशन कितना आएगा? 5। 5 5 न्यूटन, करेक्ट। Yes, Nirmit, you're saying? Nothing, sir. Okay. सेकंड में भी ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रहेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में प्लेन है, तो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो सकता, तो मोशन होगा सरफेस के पैरेलल, यहाँ पे भी सरफेस के पैरेलल। किसी का सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2? सर क्वेश्चन 1 में A1 और A2 इक्वल है ना? हाँ, A1 A2 इक्वल होगा क्योंकि सेम रोप है। हाँ, तो मतलब उसकी वैल्यू 5 होगी। हाँ, और टेंशन दोनों का सम है ना? टेंशन दोनों का सम है मींस? A1 एंड A2 का। हाँ, व्हाई इज दैट? क्योंकि जब मैंने वो सेकंड बॉडी का FPD बनाया तो T इक्वल्स A2 आ रहा था। हाँ, बट मुझे पता है कि सेम रोप है, तो सेम रोप मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ओके सर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टेंशन 5 न्यूटन आ जाएगा A1 को पुट करके। Bharvi, tell me the value of acceleration. सर नहीं आ रहा। Aditi, can you tell me the value of acceleration here? Question number 2. Sir, I'm trying. Okay. अच्छा, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है? No, it's a formula. It's not a numerical value. M1, M2, theta1, theta2 के टर्म्स में आएगा आंसर। फिर एक्सेलरेशन m1g sin theta 1 minus m2g sin theta 2 upon m1 plus m2. Yeah, that is correct. Good. M1g, g कॉमन ले सकते हैं, so m1 sin theta 1 minus m2 sin theta 2 divided by m1 plus m2, और g कॉमन लिया था यहाँ पे g, कितना हो जाएगा? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बाकी सब जो रिजल्ट आएगा दैट यू हैव टू ट्रस्ट। सो मैंने डिसाइड किया एक्सेलरेशन इस साइड में है, मींस इफ यू वांट यू कैन टेक एक्सेलरेशन ऑन द अदर साइड, नो इश्यू अबाउट दैट। सो एक्सेलरेशन इधर है, m1g नीचे के साइड लगेगा, और दूसरा फोर्स है नॉर्मल फोर्स, एंड तीसरा फोर्स है टेंशन वाला फोर्स। तो मुझे पता है कि प्लेन के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। So I'll take component along two directions, one perpendicular to the plane, one along the plane. So अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। So this is m1g cos theta, और m1g का component इधर आ जाएगा m1g sin theta। तो यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगे। पहला इक्वेशन आएगा, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, so normal force is just equal to m1g, जिसको n1 लिख देते हैं, दो मासेस है इसमें, so n1 is equal to m1g cos theta। और दूसरा एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, सो m1g sin theta minus टेंशन is equal to mass into acceleration। सिमिलरली दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सेम वे सेम मेथड फॉलो करेंगे। सो तीन फोर्सेस है, पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स m2g, देन कॉन्टैक्ट फोर्स
फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और एक तीसरा टेंशन भी है। टेंशन लगेगा सरफेस के अलावा। तो अगेन ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, थीटा 2 टू बी एग्जैक्ट। सो दिस इज m2g cos थीटा, और इधर हो जाएगा m2g sin थीटा। सो इक्वेशन सेम बनेगा, बस ये दिखने में थोड़ा अलग है। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो। सो आई कैन राइट n2 इज इक्वल टू m2g cos थीटा। इस रिलेशन में कोई यूज नहीं है, बट इट इज राइट, मे बी बाद में कभी क्वेश्चन में यूज है। सो एंड सेकंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन इज एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, बिकॉज ये वाला नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। तो m2g sin थीटा को पॉजिटिवली लिखेंगे। आई विल टेक दिस वन एज पॉजिटिव, टेंशन को पॉजिटिव लेंगे। So I'll get the equation T minus m2g sin theta 2, that is equal to mass into acceleration. यहाँ पे मुझे m1a लिखना चाहिए because mass is m. So अभी I will take my first equation and second equation और दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। So m1g sin theta minus t equals to m1a. T minus m2g sin theta 1 sin theta 1 equals to m2. दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट विल गेट हियर इज m1g sin theta minus m1g sin theta 1 m2g sin theta 2, that is equal to m1a plus m2, इसको हम m1 plus m2 लिख सकते हैं। यहाँ से ये सॉल्व होके आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू विल बी दिस। और टेंशन के लिए यहाँ पे बस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी। सो सॉल्व इट एंड टेल मी टेंशन कितना आ रहा है। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, नॉट यहाँ पे, इधर इस वाले केस में ए की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दैट विल बी m2g sin theta 2 प्लस m2a, m2a मतलब m2a, a यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा इक्वेशन आएगा बट सॉल्व होके रिड्यूस हो जाएगा सिमेट्रिकल फॉर्म। सो ट्राई दिस। सॉल्व दिस एंड टेल मी इतना आंसर आ रहा है क्या। अच्छा, वंस यू सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो फोर्सेस हैं, पहला एक mg और दूसरा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। सो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट में एक और फोर्स लग रहा है। So there is a force acting, and right here F is equal to kV in this direction. तो यहाँ पे मुझे you have to find out velocity as a function of time t in question number 3. निर्मित सेकंड वाला आ रहा है ये इतना आंसर। सेकंड, हाँ हाँ सर। तो एक फोर्स mg लग रहा है, दूसरा फोर्स F है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे ही mg लगेगा वैसे नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा,
तो बॉल जैसे ही नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा एक फोर्स लगने लगेगा वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट। सो फोर्स F ऊपर लगेगा। सर ये टी टेंशन मेरा नहीं आ रहा। ये लिख लिया T इज इक्वल टू m2g sin थीटा 2 प्लस m2a। नहीं सर यही तो नहीं आ रहा। सी यहाँ पे T माइनस m2g sin थीटा 2 इक्वल्स टू m2a लिखा हुआ है। तो अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, दो अननोन्स है यहाँ पे, टेंशन और एक्सेलरेशन। टेंशन और एक्सेलरेशन अननोन था, एक्सेलरेशन पता चल गया। So what we can do, we can put the value of acceleration from this value। ये जो फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो m1 g sin थीटा 1 माइनस m2 g sin थीटा 2। तो ये पुट करेंगे एक्सेलरेशन की जगह। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करना है, वो मैंने तो खुद से ही करनी है। हाँ सर वो मैं कर लूंगा। Vaishnavi, did you calculate question number 3? No, sir, I'm doing. Okay. सर थर्ड क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा? क्या थर्ड क्या क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, बिकॉज जो फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जाएगा। See, for this question, see, you have to separate the functions of v and t. So you can take m out of the integration. This becomes dv divided by mg minus k. और dt का इंटीग्रेशन तो t होगा। Out about that, upper limit, lower limit, you can put. To integrate this, I need to take mg minus kv as a third variable. So let me take mg minus kv as a third variable. Take it as z. So z equals to mg minus k. So I have to replace dv by dz. So dz will become dz by dv will become minus k. From here I can write dv is equal to minus dz by k. So this will become m dv की जगह लिख सकते हैं minus dz by k, minus dz by k, और mg minus kv क्या हो जाएगा, that is z. So this will be minus m by k. dz by z का इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा, that is ln z. So ln z, और ये लिख सकते हैं minus k by mt. What is z? Z is mg minus kv. So this becomes ln mg minus k. mg minus k. लोअर लिमिट वेलोसिटी का 0 था, अपर लिमिट v था. So this will give me log of ln of mg minus kv minus
ln of mg. So log a minus b, that is equal to log a by b. So this will be log mg minus kb whole divided by mg. So log को replace करेंगे तो e का power लिख सकते हैं. So this is mg minus kb by mg, that is e to the power minus k by m into d. This will become 1 minus kb by mg equals to e raised to minus k by mt. Finally, I can write kb by mg equals to 1 minus e raised to minus kt by m. That will give me velocity as mg by k into 1 minus e to the power minus k by mt. This is the final answer. Velocity as a function of time t. ये मेथड याद रखना है, ये कई बार रिपीट होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं. एंड दिस इज द केस ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स. तो रेन ड्रॉप्स जब फॉल करते हैं तो दो फोर्सेस लगते हैं. अगर बुओइंट फोर्स भूल जाए तो एक तो mg लग रहा होता है, दूसरा ड्रैग फोर्स लग रहा होता है. तो ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, बट वेलोसिटी के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है. सो होता क्या है, स्टार्टिंग में पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है एंड फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ता जाता है. तो वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड ये ग्राफ 1 माइनस ई का पावर एक्स ऐसा होता है. ये रीच करता है एक मैक्सिमम पे, like this, but it never reaches that point. जब t infinity होगा तो velocity will become mg by k. Velocity will become mg by k. और उस velocity को हम बोलते हैं terminal velocity vt. वो maximum velocity है जो body attain कर सकता है. So vt, that is the terminal velocity, is mg by k. This is called the terminal velocity. इससे ज्यादा वेलोसिटी अटेन नहीं कर सकता. तो जब भी ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी में फॉल कर रहे होते हैं एंड ड्रैग एक्ट कर रहा हो तो दे विल रीच अ टर्मिनल वेलोसिटी. एंड दिस इज द रीजन दैट की रेन ड्रॉप एक्सेलरेटेड नहीं होता है. रेन ड्रॉप्स दे फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी. नोट दिस डाउन. Do ask if you have any question. So, So can you scroll up? yeah. So वो ड्रैग फोर्स वाला भी कॉपी करना है. Yes, that is important. This graph is important. ये रिपीट होगा कई बार, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में भी रिपीट होगा. So mg by k कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन कर सकता है बॉडी, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं. Okay. After this, अच्छा ड्रैग फोर्स कभी कभी वेलोसिटी के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है. So let us do that also. So take the problem like this. An object is falling under gravity and there is a force, drag force, which is proportional to the negative of velocity, negative of square of the velocity. So find velocity as a function of time. Same way, integration करना है and final result. So initially,
at t is equal to 0, velocity is 0. जैसे जैसे velocity gain करेगा object, तो velocity की opposite direction में force लगेगा, तो ऊपर के direction में force लगेगा, जिसकी value होगी kv square. So जैसे जैसे velocity बढ़ता जाएगा तो ऊपर वाला force बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों force balance out हो जाएंगे, फिर acceleration 0 हो जाएगा. तो acceleration 0 हो जाएगा तो again it will gain a terminal velocity. Solve this. Okay, let's leave the question up to here. The integration that is required here is not yet taught to you. So we can just find terminal velocity. So when velocity is equal to terminal velocity, when velocity is equal to terminal velocity, in that case, acceleration becomes 0. So mg minus kv square, that is equal to 0. From there, you can find the velocity as root over mg by k. That will be the value of speed or terminal velocity, vt. And ये integration solve करने के लिए you'll have to first study integration in mathematics. After this, the next topic is combination of springs. Combination of spring. So suppose अगर एक single spring हो, there is a single spring and you're extending it. So you have to apply a force, and इस force के response में extension होगा. Let us say that extension is x. So you know that the spring force is equal to negative of kx. और जो spring force होगा opposite direction में, that will balance the external force. Okay, so spring force is equal to negative of the force. From here we can write that the external force, F external force, this is equal to kx. ये spring वाला force है, and external force should be equal to spring वाला force, but negative. Negative because तभी एक दूसरे को balance कर पाए. But suppose अगर एक spring की जगह दो spring use कर रहे हो parallel. So अगर parallel में springs को attach कर रहे हैं, let us say इसका spring constant K था, first case. In second case, that is springs in parallel. Springs in parallel. Let us say first वाले का spring constant is K1 और second वाले का spring constant is K2. दोनों different materials से बने हैं. And इसको same plate से जोड़ा गया है, such that the extension in both the spring is same. And then you're applying a force that is external force. So x, that is the extension, is same. Extension in both spring is same. So let us say the first वाला spring है, ये force लगा रहे हैं F1 और second वाला spring लगा रहे हैं force F2. So F1 will be equal to minus K1x and F2 will be equal to minus K2x. So we can write that F external जो force लग रहा है, that will be equal to minus F1 plus F2 because opposite direction में लग रहा है. So that will be equal to K1x plus K2x.
So external force हो गया K1 plus K2x. K1 plus K2x. अगर मुझे दो स्प्रिंग की जगह सिर्फ एक स्प्रिंग यूज करना है, such that extension same हो, if we want to use a single spring in place of two springs, so उसका spring constant क्या होना चाहिए? You can compare this with an equation. Compare this with an equation that F external is equal to kx. So k equivalent या जो है k equivalent will be equal to k1 plus k. So this is equivalent spring constant in parallel. This is equivalent spring constant in parallel. दो जो स्प्रिंग जब पैरेलल में हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट सीधा ऐड हो जाता है. ये रेजिस्टेंस वाले केस के ऑपोजिट है. रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तब दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं. बट हियर दे आर इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स इन पैरेलल. नोट दिस. So these are the springs in parallel. We just have to add the spring constant. And next we are going to solve when these springs are connected in series. So when springs are connected in series, the force remains the same. In the previous case, extension was the same, but in this case, the relayed force remains the same. So this is the F external, and but here extension will be added because the extension here is x1, and here extension in this is x2. Okay. So F external, that will be equal to k1 x1, and that is also equal to k2 x2, because एक ही लाइन में है थी. So यहाँ पे लगने वाला फोर्स इस वाले स्प्रिंग में फोर्स है, let us call it Fs1, and यहाँ पे लगने वाला स्प्रिंग में फोर्स जो है that is Fs2. So you can write Fs1 that is equal to minus k1 x1, and Fs2 that is equal to minus k2 x2. So external force that should be equal to minus of spring force in S1 minus of spring force in S2. So in this case, the force remains the same and extension is added. So let us say कि इसको replace करके what you want to add, एक single spring add करना चाहते हैं जिसका extension same हो. तो यहाँ पे F external की वजह से same extension होना चाहिए जो इन दोनों की वजह से हुआ है. So let us say extension x is equal to total extension x1 plus x2. So equivalent का मतलब यही होता है कि स्प्रिंग को रिप्लेस करना है एक दूसरे स्प्रिंग से जिससे कि फोर्स और एक्सटेंशन चेंज ना हो. So from here x you can write x as, इस केस के लिए लिख सकते हैं F external is equal to k times x, that is k equivalent of series. This is k equivalent. So x will be equal to F external by k equivalent. x1 यहाँ से लिख सकते हैं. From here you can write x1 will be equal to F external by k1, and from here you can write x2 is equal to F external by k2. This comes from here and this comes from here. So x1 आ जाएगा F external by k1 and x2 will be F external by k2. इसको solve करेंगे F external cancel out हो जाएगा and you'll get 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. This is the series equivalent, and जैसा resistors में parallel में होता है वैसे यहाँ पे series में add होता है.
Let us do some questions based on this. So let us say we have two springs and their spring constant is given. For the first spring constant is 200 Newton per meter, and second spring, this is 300 Newton per meter. And you're applying a force, external force, that is equal to, let us say, 15 Newton. So to find extension, and force applied by each spring. Force applied by each spring. Solve it. So K equivalent, first you can calculate K equivalent. K equivalent for parallel is K1 plus K2. That is 500 Newton per meter. So F is equal to Kx, K equivalent X. So this is 500 equals to K equivalent is, no, F is 15. So K equivalent is 500 X. So the extension X will become 15 by 500. And if you write the units, it will become the meter. If you want to write it in millimeter, I can multiply it by 1000. So X will be 30 millimeter. If you want to convert it to centimeter, that will be 3 centimeter. Then spring force in the first one, that will be K1, and spring force in the second one, that will be K2x. So K1 is 200 into 3 by 100, and F2 will be K2 into 3 by 100. So first spring, that will apply a force of 6 Newton, and the second spring will apply a force of 9 Newton. Like this, the force will be distributed. Sir, F1 and F2 negative होंगे ना? Yeah, spring force will be negative side, right? Negative side. Next question. Suppose I have two springs in parallel. And they are attached to a mass of 10 kg. So for this, the spring constant is 70 Newton per meter. And for this one, the spring constant is 30 Newton per meter. So to find extension in this spring and force applied by each spring. And force applied by each spring. Instead of F external, we have a mass hanging. So नीचे force लगेगा mg. Sir, in first question, the force of the spring will be negative or positive? It depends. So if you force applied by spring will be in the upward direction. So that you can take as negative. As magnitude matter करता है. Usually in the exam, the question will be asked for magnitude. Okay.
Arjun, can you tell me the equivalent spring constant? What will be the equivalent spring constant? नहीं पता. See, दोनों पैरेलल में है ना, सिर्फ डायरेक्टली ऐड कर देना है k1 plus k2. इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, so this will give you 170 plus 30, that is 100 Newton per meter. और नीचे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, so 100 is equal to k equivalent into x. दोनों में एक्सटेंशन सेम होगा, so 100 by k equivalent, 100 Newton by 100 Newton per meter, that is 1 meter. We calculate F1 is equal to minus k1x, that will be minus 70 Newton, and F2 equals to minus k2x, that is minus 30. So negative sign important नहीं है यहाँ पे. What's important is the magnitude. If there are 3 springs or 3 or more springs, so for series, you can expand the same formula. So 1 by k equivalent will be 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3. 4 आ जाए तो ऐसे expand कर सकते हैं. And if it is in parallel, then k equivalent will be equal to k1 plus k2 plus k3. ऐसे extend होता चला जाता है. So in this question, you have to find extension. Find extension. पहले total extension and then extension of each spring. Find total extension, then extension of each spring. Aditi, can you tell me the value of k equivalent for this question? Equivalent spring constant. Sir, 900. No, this is in series. Series के लिए different formula होता है. For series, the formula is this: 1 by k equivalent equals to 1 by k1 plus 1 by k. Use this formula. Sir, 0.005 Newton per meter. अरे वो तो 1 by k equivalent होगा ना. You have to find k equivalent. हाँ तो फिर वो 200 हो जाएगा. Yeah. K equivalent is 200. So what is the extension for 10 kg? Half. Yeah, half meter. Then what will be individual extension? Sir, half meter. तो individual पहले 1/6 meter आता है, which is 0.167 meter. फिर दूसरा वाला 1/3 meter आता है, which is 0.33 meter. 100 फोर्स तो 100 न्यूटन ही होगा दोनों में. हाँ. 1/6 and 1/3. हाँ. Then can you tell me this one? सर इसमें टोटल एक्सटेंशन 5.01 मीटर. या k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? सर मैंने वो
इंडिविजुअली फाइंड किया x1 x2 x3 ओके, x1 x2 x3 कितना आ रहा है? x1 0.84 मीटर ओके, 1/12 ना, 10/12, so 5/6 कितना? सर 0.84 मीटर x1 इस वाले का एक्सटेंशन है 120 वाले का। हाँ ओके, 0.84 ही होगा। सर सर f एक्सटर्नल इक्वल्स k1 इंटू x1 ना, या तो फिर x1 100 डिवाइड बाई ये 120 होगा ना। या सो 5/6 120 divided by 100 divided by 120 is 5/6, तो सही है, 0.84 is correct. ओके सर देन x2 की वैल्यू 1.67 मीटर एंड x3 की वैल्यू 2.5 मीटर, करेक्ट, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? 5.01 मीटर। ओके, 5 ही आएगा। ओके, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिर, वो भी कैलकुलेट करना है। 0.05 या 1/20 20 0.05, तो 1/k होगा, के इक्विवेलेंट विल बी 20 न्यूटन पर मीटर। Okay, suppose the springs are connected like this. Two springs are in parallel. This is 100 Newton per meter. This is 100 Newton per meter. This is 200 Newton per meter. Then this is attached to a block, and block का जो mass है that is 10 kg. Find total extension and extension of each spring. Okay, first find K equivalent, then total extension, and then extension of each spring. सर Yeah, स्प्रिंग्स मासलेस तो नहीं हो सकती ना। spring massless consider करना पड़ता है, मतलब 10 kg कंपैरिजन में 10 ग्राम या 20 ग्राम मास है तो इग्नोर कर सकते हैं। ओके सर तो Shagar, can you tell me the value of K equivalent? ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 200 और 200 हो जाएगा, so K equivalent will be 100 Newton per meter, and then yeah, the net extension आ जाएगा 100/100, that is 1 meter, फिर 200 वाले में एक्सटेंशन हो जाएगा 0.5 मीटर, और इन दोनों का मिला के एक्सटेंशन विल बी equal, so that is 0.5. सर Yeah, सर x1 प्लस x2 0.5 होगा ना। नहीं दोनों का एक्सटेंशन इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में
पैरेलल वाले में एक्सटेंशन सेम होता है, ऐड नहीं होता। दोनों पे मिला के फोर्स लगेगा 100 न्यूटन। सो इस पे भी 0.5, इस पे भी 0.5। सो कभी kx आएगा यहाँ पे 50 और यहाँ पे भी kx आएगा 50, फिर ये 100 को बैलेंस कर पाएगा। सर ये के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100 कैसे आया? सो पहले ये 100 और 100 दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट 200 हो जाएगा। यस सर, ये तो हो जाएगा 200। फिर 200 और 200 सीरीज में है, तो वहां से 1/k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/200 ओके 1/2। हाँ सर, अब आ जाएगा। ओके।